Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will be providing you the solution of our data without the degree arcade challenge introduction to migration center assessment. Okay, इस लैब को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी इसको अपलोड करने में, क्योंकि इस लैब में बहुत सारी एरर्स आ रही थी. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैब है, इस तरीके की लैब हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए इसको सॉल्यूशन अपलोड करने में डिले हुआ है. इसके कई सारे रीटेक करने पड़े इस वीडियो के, तब जाके आपको वीडियो मिल रही है. तो यस, आई एम वेरी सॉरी, बट आपको जल्दी से जल्दी ये लैब कंप्लीट करनी होगी. वो कई बार इसकी लैब एंड हो चुकी है, मतलब टाइमर रन आउट हो जाता है. हमारे पास जो 1 30 मिनट्स मिले हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. और हमारे टास्क 8 में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब हम टास्क 8 कर रहे हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दिस लैब. क्लिक ऑन द स्टार्ट लैब बटन, वेट फॉर द क्रेडेंशियल्स. एस्टिमेटेड टाइम आपको कुछ गिवन होगा, क्योंकि ये लैब ऑलरेडी काफ़ी बग से फुल ऑफ बग्स है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस लैब पे, इसलिए इसमें थोड़ा सा एस्टिमेटेड टाइम आपको देखने को मिल सकता है. इसका मतलब ये है कि आपको 1 से 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे. So once you get the credentials, simply right click on open Google console and open in its private window or in incognito mode. Otherwise you will face certain issue. आपको ये पता है. Email ID will be automatically pasted up. Simply click on the next button. हमें सिर्फ पासवर्ड चाहिए होगा, तो पासवर्ड के लिए हम वापस आएंगे. पासवर्ड कॉपी करेंगे, ध्यान से करिएगा, लास्ट वाला जो पासवर्ड है उससे कॉपी करना है. यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड वी गेट लॉग्ड इन इनटू Google Cloud console. Okay, so wait for it. A welcome message will arise. ओके, अगर मेरे केस में वेलकम मैसेज नहीं आया है, आपके केस में आया तो आपका अंडरस्टैंड भी क्लिक करना होगा. उसके बाद एक पॉपअप आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा. यहाँ पर आता है पॉपअप. आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, कई बार आता है कई बार नहीं आता है. तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आपको सिंपली मेरे स्टेप फॉलो करने हैं. यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली होवर अपॉन कंप्यूट इंजन, नाउ सिंपली गो टू द VM इंस्टेंस. ओके, सो वेट फॉर द VM इंस्टेंसेस टू बी लोडेड अप. एंड वाइल इट्स लोडिंग, व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की स्पेशल जो फाइल है, एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है रिमोट डेस्कटॉप करके, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, वो आपको डाउनलोड करना होगा. उसके बिना ये लैब कंप्लीट नहीं होगी. तो उसका डाउनलोडेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट की एक्चुअल ऐप है, आपको ऑथराइज है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सॉफ्टवेयर है. ओके, सो आफ्टर यू डाउनलोडिंग दैट ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हाट यू नीड टू डू, क्लिक ऑन दिस RDP button. Click on this download the RDP file. It will start to download the RDP file in your downloads folder. Okay, so save it with wherever you want to save. After that, click on this cancel button, then click on this arrow to drop down menu, then click on set Windows password. Okay, so we need to set the Windows password. Actually ये पहली लैब ऐसी होगी जिसमें हमें वर्चुअल मशीन प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हमें एक्चुअल में सर्वर से कनेक्ट करनी होगी. Okay, so here you need to click on the set button. After that, you need to locate the file which you downloaded, wherever you downloaded. I saved it under the download section, तो मैं डाउनलोड सेक्शन के अंदर आऊँगा और इस तरह की आपको फाइल दिखेगी. अगर आपको वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे. ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड करना है. उसके बाद आपको फाइल पे राइट क्लिक करना है और let me see, right click on the file, and after that you will need to open it with this remote desktop. Okay, so let me see, it's showing some delay, don't worry. Yes, you need to click on this open with and remote desktop. Okay, you need to open it with the remote desktop. This is the software provided by the Microsoft. तो होता क्या है, हमें कई सारी कंपनी वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम इस पर्टिकुलर IP एड्रेस के थ्रू अपने लोकल सर्वर पे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन, वेट फॉर इट टू गेट कनेक्टेड and click on this connect anyway. Now we need the password. So for the password, simply first of all click on this three dot, and after that we need to minimize it. Okay, so click on this three dots, click on this full screen, then you can minimize it. Simply come back to the original lab पे वापस आएंगे, and you can copy this password. This is the password that is required. Come back to the remote desktop, paste it here, and click on this connect button, and we get logged in into our virtual machine. Okay, let me check if the password is wrong. If you mistakenly press anywhere else and it will start to showing the interface like this, अगर आपको गलती से भी कहीं क्लिक करके पासवर्ड रिमूव हो जाए तो क्या करना है, फिर से इस पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन दिस सेट विंडोज पासवर्ड. अगेन अ पॉपअप विल ओपन, क्लिक ऑन दिस सेट. मेक श्योर यूजर नेम आपका और इस डेस्कटॉप का सेम हो, नहीं तो एरर होगी लॉगिन करने में. ओके, सो लेट मी चेक वंस अगेन. कॉपी दिस यूजर नेम, कम बैक टू. ओके, सो द प्रॉब्लम विद माय डेस्कटॉप इज, क्योंकि मैंने कई बार ये लैब किया तो कई सारी फाइल सेम नेम से डाउनलोड हो गई हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ से वीडियो कट करके एक्चुअल फाइल ओपन करता हूँ. मेरे में कई सारी, आपके में तो एक होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम चेंज है, इसलिए मुझे पता चला कि मैंने गलत फाइल ओपन कर लिया. आपके में तो सिर्फ एक ही होगी. ओके, सो लेट मी स्किप दिस पार्ट. तो मैंने आप सबको सेट कर लिया, अपनी जो फाइल है जरूरत की वही ओपन करी है. मल्टीपल फाइल्स हो जाती हैं सेम नेम से तो एरर आती है. ओके, तो कोई बात नहीं है, आपके में सिंगल ही फाइल डाउनलोड होगी. नाउ यू नीड टू कॉपी दिस पासवर्ड, कम बैक टू हियर, पेस्ट द पासवर्ड हियर, क्लिक ऑन दिस कनेक्ट बटन, and we get logged in into a server machine. Okay, so wait for it while it's happening. And yes, it will take a lot of time. हो सकता है थोड़ा सा डिले दिखाए, ये बेस्ड है आपके इंटरनेट पे. इंटरनेट कनेक्शन जैसा होगा वैसे ही ये मशीन परफॉर्म करेगी, बिकॉज ये कंप्लीटली क्लाउड मशीन है. तो अगर आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो लैग नहीं देगी, अगर इंटरनेट थोड़ा वीक होगा तो काफी लैग देखने को मिलेगा. तो जल्दी से जल्दी लैब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो वेट फॉर इट, इट विल थ्रो अ पॉपअप, वेट फॉर इट.
this is the pop-up I'm talking about. Click on this cut button to minimize it. After that, we need to open the Chrome. Okay, so first of all, click on this to open the Chrome. We need to open it in the virtual machine. अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ. कभी मैं virtual machine में switch करूँगा, कभी अपने local desktop पे. तो आपको ध्यान रखना है मैं किस में क्या काम कर रहा हूँ. Okay. After that, we need to click on this plus button and we need to log in into the Cloud Skill Boost. So simply type Cloud Skill Boost and hit enter button. We need to log in into this. Click on this Google Cloud Skill Boost. क्लिक ऑन दिस साइन इन बटन. एक्चुअली वी नीड टू ओपन दैट लैब जो हम एक्चुअल अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं वो लैब इसमें ओपन करनी है. तो हमें साइन इन पे गूगल करना होगा, ईमेल से जैसे आप साइन इन करना चाहे उससे साइन इन कर लें. जिस आईडी से आप ये लैब परफॉर्म कर रहे हैं उसमें साइन इन करना है. ओके, तो जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मिलूंगा आपसे. So now you can see I am in our actual ID. I logged in with the actual ID that I am performing the lab. Okay, so now here you need to locate our data without the degree arcade challenge. So simply scroll down, keep scrolling, and you will see your challenge data without the degree arcade. Click on the continue button to enter into the data degree challenge. Okay, so keep scrolling, and open that lab which we are actually performing. So हम open कर लेते हैं जल्दी से. Scroll down, click on this lab to open. You can see it's under the progress because हमारी actual computer में lab चल रही है. अब क्या करना होगा? Scroll down करेंगे. Keep scrolling to the task number 1. Keep scrolling. Now you need to copy this URL. Copy it very carefully. It's under the task number 1, point number 2. Now open a new incognito mode. For this, click on this 3 dot and click on this new incognito mode. And we need to paste the URL here, paste it here, and hit enter button and wait for it to log in. Now we need to paste the email ID and username that is given to us. Simply come back to the lab and copy this GCP username for the email ID. Come back to the incognito mode. Make sure आप ध्यान से switch करें कब मैं किस टैब में काम कर रहा हूँ. इस वक्त मैं incognito में हूँ तो आपको भी incognito में work करना है. And for the password, simply come back to the lab again. Copy this password, that is this one, GCP password, last one. Come back to here again. Paste the password here. Click on the next button and wait for it to get logged in. Here under the search bar we need to search for the migration center. Okay, so type here migration center, open it, migration center. Wait for the pop-ups to appear. We need the migration center search bar, so click on this migration center and we get the interface of the migration center. Okay, so now here what we need to do, under this region we need to select the US central one. Select it, click on the continue button, wait for the next page. So click on this discover assets, wait for it to get load. Okay, now we need to click on the add data. Now for the credentials like client name and the service account, we need to come back to the lab. Okay, so we can come back to the original lab actually. So come back to it, scroll down. We are now under the local desktop. जो हमारा actual desktop है जहाँ से starting करी थी वहाँ पर हम आ गए. इस वक्त हम अपने क्लाउड मशीन में नहीं है, तो हमें जो डाटा चाहिए वो हमें यहाँ से मिलेगा. जैसे क्लाइंट नेम हमारा ये है तो इसे कॉपी कर लेंगे. So copy it carefully. ध्यान से कॉपी करें, कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए. Now we need to paste it under the client name. So paste it here. Now scroll down, click on the service account, and we need to search. Actually, select this one, migration client at the Qwik account. Now, under the estimate number of assets, we need to type 6. Now scroll down. Now we need to click on this add data sources. Okay, so now it will take a little bit time. So it will take around 2 minutes. तो आपको wait करना होगा यहाँ पर. So once this get completed, you will see a next page which is saying the downloading file. So we need to click on this download button, and a file will automatically started to download in the virtual machine जो हमारी cloud computer में मिला है remote desktop, उसमें ये file हमारी download होना start होगी. After it get downloaded, you need to click on this arrow button and you need to click on this open when done. Okay, तो ऐसे करने से ये एक .exe file setup है actually. सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है जो हमें रन करना है. अब इसको रन होने में करीबन 2 से 3 मिनट लगेगा क्योंकि ये सर्वर पे जो है काम हो रहा है, क्लाउड सर्वर पे वर्क हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में. तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा इंस्टॉलर यहाँ पर अपीयर ना हो जाए. एक पॉपअप आएगा जिससे हमें परमिशन देनी होगी, तब तक हम वेट करेंगे. ओके, सिंपली वेट करते हैं. So after a couple of minutes, you will see a notification like this. You need to click on this yes button. After that, the installer will start to install the things. Click on this OK button. Now you need to accept it. Click on this next button. Click on this next again. Now you need to check this create a desktop shortcut. Click on this next button. Wait for it to get created. Click on this install button and it started to install the software. ये हमारा माइग्रेशन सेंटर का सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल होने में करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे. पहले ये वाली प्रोसेस पूरी हो जाएगी, ये जो ग्रीन बार वाली है, फिर एक और यहाँ पर पॉपअप आएगा जो स्टार्ट होगा इंस्टॉल करना. ओके, तो आपको करीबन 10 मिनट लगने वाले हैं, तो वेट करना है. तब तक आप और कुछ नहीं कर सकते हैं. कोई एक्स्ट्रा इंटरनेट मत यूज कीजिएगा, नहीं तो मशीन क्रैश होने का डर है. ओके, तो मेक श्योर आपका कनेक्शन स्टेबलाइज हो और आपको वेट करना है 10 मिनट. इन दैट टाइम जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. So now you can see our installer is done with the setup. So you need to click on this finish button. जब आपका done हो जाएगा आपको finish button आ जाएगा. Click on this finish button. Okay, now you need to minimize this Chrome tab under the virtual machine. हम virtual machine में हैं, आपको Chrome tabs minimize करने हैं. After that you will see option like this or the file icon of the migration software. You need to right click on it and open it as the administrator. Run as administrator. A pop-up will arise. You need to accept it. Click on this yes button. After that, our migration center collection will be started up, and you need to set up it. This is a client. Okay, so scroll down, and before scrolling down, you need to click on this button to minimize it a little bit. Now scroll down till you see the authorize with migration center button. Click on this to click on the to redirect it to this page. After that, you need to run check button. Wait a little bit. Click on this continue button. After that, you need to click on login with the Google. Okay, so wait for it. Click on this close button. Maybe next message or pop-up will arise for you. आपके लिए एक और pop-up आ सकता है यहाँ पर जिसको आपको कैंसिल करना होगा. After that, you need to copy this whole URL. आपको URL copy करना है. Copy it very carefully. Okay, and minimize it and come back to the original tab here.
आई एम अंडर द वर्चुअल मशीन राइट नाउ, मैं वर्चुअल मशीन में हूँ, अपने क्रोम के सिंपल टैब में आए हैं, एक न्यू टैब ओपन करेंगे यहाँ पर, या आप इनकॉग्निटो मोड में आ जाएं, एक्चुअल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में। अगेन वी आर अंडर द वर्चुअल मशीन, हम अपने डेस्कटॉप पे नहीं है, वर्चुअल मशीन में इनकॉग्निटो मोड में हम अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, हिट एंटर बटन। नाउ यू नीड टू साइन इन विद द स्टूडेंट ईमेल आईडी दैट इज गिवन टू यू, scroll down, click on this continue button, wait for it, and you will see receive verification code. You may now close this window. It means our verification is now completed. Once again, we are in the virtual machine and in the incognito mode. Okay, now you can minimize this incognito mode and open this manager again, the client again, and you can see a continue button is here, successfully authenticated. Click on this continue button. Now you need to choose the project, click on this and select this Qwik GCP project, click on the continue button. Now you from here you need to select a collector, so select this and click on the authorize button and wait for it to get authorized. It will take around 1 to 2 minutes. Now here what you need to do, simply cross it, click on this cut button. Now minimize it, you can minimize the RDP or the virtual machine and come back to the original lab. Once again I am under the original computer. Okay, now come back to the lab, scroll down, keep scrolling, click on the check my progress, you will get the green tick for the task number 1. You can see it takes a lot of time, so आपको बहुत जल्दी ये सब करना है, जल्दी हो सके। मुझे अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो लेकिन आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, तो जैसा मैं करूँ वैसे ही करना है। असेसमेंट इज कंप्लीटेड, स्क्रॉल डाउन, कीप स्क्रॉलिंग, क्लिक ऑन दिस चेक माय प्रोग्रेस फॉर द टास्क नंबर 3 एंड यू विल गेट द ग्रीन टिक फॉर हियर. Wait for it, you can see assessment is complete. Now scroll down. Now in the task number 4, copy this username, we need to create something, so for that we need the credentials, copy this username, come back to the remote desktop. Actually we are now under the virtual machine. Here we need to click on this add credentials button. After that click on this OS scan, click on this configure button. Now paste the name and the credential, paste it here, click on this and select username and password. Okay, now for the username and the password, come back to here, you can see we need to select the username and the password in the credentials type, and for the username copy it very carefully, come back to here, paste it under the username, scroll up and we mistakenly name it wrong. हमें स्टार जोन और द क्रेडेंशियल्स नेम दूसरी चीज पेस्ट करनी है, पहले से रिमूव करेंगे. कम बैक टू हियर, पेस्ट इट, कॉपी इट, पेस्ट इट अंडर द नेम क्रेडेंशियल्स. ओके, पेस्ट इट हियर. हमें क्रेडेंशियल्स का नेम अलग देना था, वो यूजर नेम मैंने गलती से कॉपी कर लिया था. नाउ फॉर द पासवर्ड अगेन कॉपी दिस इज द पासवर्ड, कम बैक टू द रिमोट डेस्कटॉप और द वर्चुअल मशीन, पेस्ट इट हियर. नाउ scroll down and click on this add credential button and it will add the credentials to your virtual machine. Now we need to create one more credential, so click on this add credentials button, make sure it is OS scan, click on the configure button. Now for the name, come back to here, scroll down, keep scrolling and copy this lab key as a name. We will use it as a name. Copy this key very carefully, paste it under the name, the credentials. Now under the select credential type, select SSH key and the certification. Now scroll down and keep scrolling. Yes, for the username for this key certificate, come back to here and copy this SSH key user and use it as the username for this key. Okay, come back to here, paste it under here. Now we need to upload a new SS key or the certification file, or for that what we need to do, simply come back to the incognito mode or the actual lab under the वर्चुअल मशीन. वी आर अंडर द वर्चुअल मशीन में ही है. हमें यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड करनी है अपनी लैब से. वो कौन सी होगी? डाउनलोड पीईएम फाइल. क्लिक ऑन दिस एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द फाइल इन योर वर्चुअल सर्वर. हमें अपने एक्चुअल डेस्कटॉप में नहीं करनी है, इसे वर्चुअल में करनी है. ओके, नाउ यू कैन सी फाइल इज कंप्लीटेड. नाउ कम बैक टू हियर टू द migration center discover client and here we need to browse that. Now we need to browse that file, so simply cross this and click on the browser button and we need to browse that file that we downloaded. So simply come back to the downloads button or the downloads folder. There you will see the file, click on this, click on the open button. Now scroll down a little bit, click on the add credential button and your credentials get created. Okay, after that cross it, click on the add assets button. After that click on the machine and click on the scan IP address changes and click on this agree button. I agree, click on this continue button. And after that we need to click add IP address range on this arrow button. Now click enter ranges, so we need the ranges. So for that come back to the lab पे आएंगे, scroll down करेंगे and yes, keep scrolling and copy this very carefully. ध्यान से इसे copy करेंगे, copy it very carefully. Okay, now come back to the virtual machine, paste it under the here and same IP address under this. दोनों कॉलम में same IP address paste करनी है, but अब इस वाले में हमें क्या करना है, ये remove करना है one. We need to remove this one and type 8 here. Okay, now after that click on this start IP scan and wait for it. Click on this start scan. इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे कट कर सकते हैं. अब ओरिजिनल डेस्कटॉप पे या एक्चुअली आपको अपने इनकॉग्निटो मोड में ही लैब ओपन करनी है, इनकॉग्निटो मोड में, और यहाँ पर आपको कंसोल ओपन करना होगा, क्लाउड कंसोल. सो लेट मी चेक, हमें क्लाउड कंसोल इनकॉग्निटो में करना है ओरिजिनल डेस्कटॉप पे. एक मिनट रुकिए. ओके, सो वी नीड टू ओपन इट इन द वर्चुअल मशीन के ही इनकॉग्निटो टैब में आना है हमें. वापस हम अपने कंसोल में आएंगे, क्लिक एनीवेयर एंड यू विल सी समथिंग लाइक दिस. आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस एसेट्स बटन. Again we are under the cloud machine. Okay, so click on this assets button, you will redirect it to this page. Now you need to click on this view in starter zone and it will open the starter zone page. We need to log in with the student email ID and make sure you check this button, see edit configure. Now scroll down, click on this continue button, wait for it to get login into our console.
सो वंस यू लॉग्ड इन यू विल सी इंटरफेस लाइक दिस। अगर यहाँ पर कोई एरर मैसेज आए तो आपको क्या करना होगा, इस टैब को कट करना होगा, वापस आपको एसेट्स में आना होगा, फिर से आपको व्यू इन स्टार्टर जोन करना होगा और जैसे अभी स्टूडेंट ईमेल आईडी सेलेक्ट की वैसे करना होगा, तब जब यहाँ पर कोई एरर आए, इफ यू सी एनी एरर। अदरवाइज यू विल सी अ नोटिफिकेशन लाइक दिस, सिंपली क्लिक ऑन द हेयर बटन, click on here button, sign in with the Google and select the student email ID. Simply click on this confirm button and click on this I agree to the terms and condition, click on the next button and we get logged in into the starter zone. Here what we need to do now, come back to the lab, scroll down, keep scrolling, click on the check my progress for this task, you will get the green tick here. Wait for a little bit, you can see assessment is completed. Now scroll down. Now we need to use these credentials to create a database. So first of all, we need to copy this credential name, copy it very carefully, come back to the remote desktop or the virtual machine. Here we need to open the migration center. Migration center में अब ध्यान रखना है हमें. Then click on this back arrow, click on this add credentials button. Now this time select database scan, this one, click on this configure button. Now we need to paste the name that we copied under the name, the credentials. Now from the select the data type, we need to select MySQL. Now we need the username. So for the username, copy it very carefully. Make sure आप कौन से credential से copy कर रहे हैं. मैं आपको first वाले credential से username copy करना है. यहाँ पर आएंगे, paste करेंगे under the username. Come back to here, copy this password very carefully. ध्यान से copy करेंगे. Make sure no extra spacing will be there. Paste the password. Now scroll down, click on the add credentials button, and we are done with this. Again, click on the add credentials. Again, click on database scan. Click on the configure button. Come back to the lab for the password or the username. Copy this username. Come back to here. Paste it under the name, the credentials, and select the data type. Select PostgreSQL. And for the username, come back to here, copy it very carefully the username. Make sure आप ध्यान से इस बात का ध्यान रखें कब मैं किस टैब में स्विच कर रहा हूँ. इस वक्त मैं अपने वर्चुअल मशीन में हूँ और अब पासवर्ड वगैरह के लिए मैं अपने एक्चुअल डेस्कटॉप के कंसोल में आ रहा हूँ. ओके, तो आप इसे कॉपी करेंगे जल्दी से. कम बैक टू हियर फॉर द पासवर्ड, पेस्ट इट हियर. Now scroll down, cut this, click on this add credential button, and we are done with this. Click on this add assets arrow and click on this database. Click on this enter connection strings. Now for the credential name, come back to here, scroll down, keep scrolling, copy this name, copy it very carefully, come back to here, click on this and select this name MySQL. Now what we need to do is we need to select OS machine asset, come back to the lab, scroll down. Oh yes, just copy this name lab MySQL, copy it very carefully. पूरा copy नहीं करना है, बस थोड़ा सा copy करना है full stop से पहले तक. Come back to here and now paste it here under the filter and you will see the lab name, select it. Now for the host instance name, come back to here and copy this very carefully. Come back to the remote desktop, paste it under here. After this, scroll down a little bit, click on this add asset button, and we are done with this. Now we need to click on this add assets button once again. Click on this database, click on upload CSV of connection string. Now under the credentials name, let's select the lab PostgreSQL. Now we need to download a file. For that, simply come back to the lab, copy this URL, come back to the desktop or the virtual machine. Now here we need to open the incognito mode and open a new tab in the incognito tab. Once again, we are under the virtual machine. ध्यान रखिएगा virtual machine में काम कर रहा हूँ. Paste the URL here and hit enter button, and it will start to download a CSV file in your desktop. Now after that, come back to here and you need to click on this browse button. We are under the migration center. Click on this downloads button and we need to select this PostgreSQL CSV file and open this. After that, click on the save button. You can see one record imported and 0 records failed. After that, click on the dismiss button. We are good to go now. So after that, you need to come back to the lab, scroll down, keep scrolling, click on the check my progress. You will get the green tick in this task. Wait for it. You will get the green tick in the task number 6. It will take a little bit of time. Assessment is completed. Now scroll down, keep scrolling. Now the 8th task is the most trickiest part. यहीं पर सबसे ज़्यादा एरर आ रही थी. इसमें आपको ग्रीन टिक नहीं मिल रहा था. वो कह रहे थे इसमें डाटा लोड होने में 15 मिनट्स लेगा, लेकिन इट इज टेकिंग फॉर एवर. सो होता क्या था कि हम वापस आते थे लैब पे एंड वी जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो मोड ऑफ द वर्चुअल मशीन एंड हियर वी गो टू द एसेट्स or the starter zone tab, and then we need to click on the results button. Then we scroll down and click on the inventory button, and according to them the lab is saying that we need to wait for the 15 minutes till the data gets loaded here and it's taking forever. तो यहाँ पर पूरा टाइम एक्सीड हो जाता था, लैब खत्म हो जाती थी, बार बार ऐसा कर होता था और हमारा चेक बाय प्रोग्रेस पे ग्रीन टिक हमें नहीं मिल पाता था. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली असेसमेंट पे आना है. Okay, so now we need to click on the add an assessment group. Okay, so after that we need to click on this manual asset entry, and under the asset group name you can give any name. I'm typing being notified, and under the sponsor name I'm typing subscribe. Okay, now under the sponsor email, we need the sponsor email. For that, simply come back to here and copy this username from the lab, come back to here under the machine, paste here, click on the save button. Okay, it's the solution of the problem we are facing. Now here click on this manual button for the upload type, and the set name, type the same name that we copied or the typed. So I'm typing again being notified, which is my YouTube channel name. After that, click on the save and next button. Now scroll down, click on this upload button, and we need a special CSV file which link is in the description box. आपको वो फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो कैसे करेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. आपको सिंपली इनकॉग्निटो मोड में आना है. पहले अपने क्रोम के टैब के इनकॉग्निटो मोड में आएंगे और इनकॉग्निटो टैब में आपको वो लिंक पेस्ट कर देना, या आप जैसे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे आपको वो डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी. तो आपको वो आप एक्चुअल में आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पे मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यूआरएल कॉपी करना होगा और आपको वो यूआरएल लाके अपने वर्चुअल मशीन में पेस्ट करना होगा. ओके, तो मैंने गलती से गलत यूआरएल पेस्ट कर दिया है, तो मैं अपना पहले वाला यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ.
तो यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में वो यूआरएल पेस्ट करना है जो आप यूट्यूब मेरे डिस्क्रिप्शन से लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वो लिंक कॉपी करके पेस्ट किसमें करना है, वर्चुअल मशीन में वो फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, नहीं तो आपको फाइल कॉपी पेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो वर्चुअल मशीन में ये फाइल डाउनलोड करनी है, पेस्ट करेंगे यूआरएल, एंटर करेंगे, आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन सी दिस द फाइल। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली कम बैक टू द माइग्रेशन सेंटर, or no, simply go back to the incognito mode of the virtual machine and open this Trato zone. Click again, scroll down, click on this upload button, machine information. We need to choose the file. Click on this choose file button and upload this file that we just downloaded. That is a CSV file. लैब सर्वर लिस्ट CSV फाइल। आपको ध्यान रखना है, नेम बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है। ओके, क्लिक ऑन दिस ओपन बटन। And now what, let me click on this. After that you need to click on this upload button or the upload button, wait for it. Now scroll down, click on this refresh button. Now scroll down again, click on the save and next button. Now scroll down, keep scrolling, click on this complete import button, and we are good to go now. After that, come back to the lab. Now simply scroll down, click on the check my progress. You will get the green tick in this task and it's done. Now the biggest problem is now solved. We get the green tick in the task number 8. Okay, so now what we need to do, so now we are out of the biggest problem. Task 8 में ही पूरी लैब निकल जा रही थी, तो लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। Now what we need to do, simply scroll down, copy this report name. We need to create a report, copy it, come back to the virtual machine. Now scroll up, keep scrolling. Now we can cut this pop-ups, cut it. Now we click on this reports button. We need to generate a report. Click on this generate report button. Now let me maximize this tab to show the full screen. Otherwise you will face certain issues. तो maximize करता हूँ, paste the report name under here, enter report name. Now let's check what's the error. It's not opening the select filter option, so let me cut it, come back to the results to show if it's actually working. Scroll down, click on the inventory button. Yes, the data is loaded. We don't need to worry about anything. Now come back to the reports again, click on this generate report button. Yes, the select filter option is now available. Paste the name that we copied from the select filter, select all. Now from the vendor catalog, scroll down to the bottom most, keep scrolling, and click on this private data center. Now scroll up a little bit, and from this select the on demand. For the comparison window, select the 3 years commit. No, actually the 1 year commit. Now for this one, select 3 year commit. Now click on this create report and it will start to generate our report. Okay, so we are good to go now. Come back to here, click on the check my progress. You will get the green tick in this task number 9. You can see assessment is completed. Now same we need to do for the 10th task. Copy this inventory report name. Now come back to the virtual. So come back to the virtual machine, and now here we need to click on this result. No, actually the reports button once again. Now we need to click on this generate report for the inventory. Now paste the name that we copied here. Paste it very carefully from the select filters. Click on the select all, and click on the create report button, and it will start to create our report. Now come back to the lab. Scroll down, click on the check my progress. You will get the green tick in this task also. That is our task number 8. You can see assessment is created. Now what we need to do, we need to generate one more report. So copy this name very carefully. Come back to here. Click on the reports button again. Click on this generate report under the assessment summary and proposal. Now paste the name that we copied. Click on the select filter. Click on select all. Click on the select vendor options. Scroll down. Click on this private data. Keep scrolling. Click on this private data center. Scroll up a little bit. And from here we need to select the on demand. From here we need to select 1 year. From here we need to select the 3 years. Let me check if I fill the all things very carefully or not. Yes, it's on demand, then 1 year, then commit in private data center. It's all done. So now come back to the virtual machine. So it's private data center, then on demand, then 1 year, and then 3 year commits. And click on this create report, and it will start to generate our report. Come back to the left for the check my progress. Click on the check my progress. You will get the green tick in this task also. Wait for a few minutes. You will get the green tick. You can see assessment is completed. Now we need to make changes in the task number 12. So for that, copy the name of this report name. Copy it very carefully. Simply come back to here. After that, click on the reports button. Now scroll down, click on the generate report and the detailed pricing section. Now paste the name that we copied here, paste it very carefully. Now under select filters, we need to select all. Click on this. Now from the report format, make sure it's Google Sheets. Now for the vendor catalog one, we need to select again the private data center. Scroll down, click on this private data center. And for the catalog 2, select the on demand. And catalog 3, select the 1 year commit and select the 3 year commit for this. Let me check if I am correct. Now after that, click on this create report button. It will start to create the report. Okay, so now come back to the lab for the check my progress. Come back to it, click on the check my progress. You will get the green tick in this task number 12. We are very close to end the lab. Simply scroll down for 13th and the 14th task. Copy this name. Copy it very carefully. So after copying this name, come back to here. Come back to the reports. Okay, now from here we need to select the generate report. Let me check. Yes, we need to select the detailed pricing generate report. Click on this. After that, report name में मैं paste कर देंगे name जो हमने copy किया है. And for the select filter, we need to select all. And after the vendor catalog one, scroll down, keep scrolling to the bottom most. Click on this private cloud. I select the wrong one. We need to select the private center.
click on this private data center, scroll up a little bit. For the catalog 1, we will select on demand. Then for the catalog 3, select 1 year commit, then 3 year commit, then click on this create report button, and we are good to go. And simply come back to the lab, scroll down, click on the check my progress. You will get the green tick in this task number 14th. Wait for it. You can see assessment is completed. And now finally, congratulations, our lab is also completed after too many problems. Click on the end lab button, click on the submit button. Sorry for the delay. This lab was very hectic. Click on the cancel or the submit button actually. Give the star rating. Click on the submit button. Click on this back icon to come back to the lab. Scroll down to verify whether our lab is actually completed or not. Simply scroll down, keep scrolling, and open this, and you will see a green tick beside our lab. It means we successfully completed our lab. Okay, so this is the solution of this lab. If you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the Telegram group. Okay, so that's it for this video. Thank you very much. Goodbye.